Welcome, my dear students. Life processes. This is the chapter of class 10th and it is the first chapter of biology. Life processes are all those processes which are required by an organism to survive itself or make it alive. All those processes are known as life processes. Collectively, all those processes are known as metabolism if it is biochemically inside the body. Further, metabolism is divided into catabolism and anabolism. Catabolism may complex organic materials converted into simplest one, whereas in anabolism, simple inorganic molecules are converted into more complex things, that is organic molecules. Now there are some criteria to define the actual life processes, or you can say there are some criteria to define that a thing, or you can say an organism is living. And these are some basic criteria, that is nutrition. Nutrition is the first criteria for thing, or you can say an organism, to define that it is a living organism. Second, respiration, transportation, then growth and repair, then reproduction, then there are movement and locomotion, and excretion and control and coordination. So these are some examples given in the book, but one most important is there which is not given here, and that important thing is response to the external stimulus. बाकी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, उनका प्रोवाइड होना और उनके बीच में कनेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर कोई चीज़ एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करता है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करता है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे. वो रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, इट डजंट मैटर. तो लाइफ प्रोसेसेस में क्लास 10th पे हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं पढ़नी है. इसमें सबसे पहले है न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद है सर्कुलेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन. वो न्यूट्रिशन में ही डाइजेशन आ जाता है. सो दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. बिना देर के शुरू करते हैं विद न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? सिंपली यू कैन से nutrition is the intake of food material or complex organic molecule in order to gain some nutrients. Nutrients are the chemicals which provide specific vitality to the body, that is energy. तो वो जो complex organic molecule जो हमने लिया उसको हम food कहते हैं, और जब उसकी breakdown होती है तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. और इसमें जो हमें मिलता है मीन्स द बॉडी विच गेन फ्रॉम दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. एंड द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग complex food material converted into simpler one and utilizing them to get ATP or energy, this is known as nutrition. इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो तरह के होते हैं. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोजोइक भी हो सकता है. देन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, auto means self, autotrophic means, trophic means formation of food, that is related to food. This word is related to food. Self-fooding, self-fooding means formation or synthesis of food by its own.
This type of organisms cannot depend on others for their fooding. All green plants can synthesize their own food, and they are known as autotrophic organisms. And the mode of nutrition of the plants is autotrophic mode of nutrition. Is it clear, everybody? Okay. Some chemical bacteria, chemosynthetic bacteria, are also considered as autotrophic nutrition. And the process by which all green plants synthesize their food is known as photosynthesis. So, इस चैप्टर पे हम उसको डिस्कस करेंगे. Now, पहले इसको भी समझ लेते हैं. Heterotrophic mode of nutrition. Hetero means different. Trophic means food related. So, all those organisms which are depend on others, on different one for their food related need, they are termed as heterotrophic organisms. And that type of mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. These are holozoic, like human being. Human being पूरा का पूरा खाना खाता, अंदर जाता, वहाँ digestion होता है. So this is called holozoic, complete. Okay. Then saprotropic. Sapro means you can say that organisms which gain or which can feed on dead and decaying organisms, like fungus. So if fungus is there, it is saprophytic. If some organism or animal is there, it is saprozoic. ठीक है? Then parasitic. Parasites are completely depend on other organisms, and they utilize the food or already mixed nutrients, or you can say already digested particle or nutrient of other organism, and especially they are found inside the body. They are further different types. अगर surface के ऊपर पे हैं तो एक्टो होंगे, बॉडी के अंदर हैं तो एंडो होंगे. जैसे लाइस जो शरीर में जुए होते हैं, दैट आर एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर होते हैं. हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया और छोटे छोटे निमेटोड्स या एस्केल्मेंट्स होते हैं. दीज आर एंडोपैरासाइट्स. सो दिस इज अबाउट द लाइफ प्रोसेस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the heterotrophic mode of nutrition. Okay, so heterotrophic nutrition, as I told you already, it is a mode of nutrition in which organisms can derive their food from other organisms, either they are plant or animal, it doesn't matter. So this type of nutrition is called heterotrophic nutrition, and the organisms who are categorized under this type of nutrition are known as heterotrophs. Heterotrophs. Further, heterotrophs can be classified into different types according to their peculiar or particular nature of feeding, or you can say on their particular feeding style. For example, herbivores. Herbivores are those organisms which are completely depend on plants for their nutrition. Only plants and plant products for their survival. And for specific examples are, you can say goat, deer, and all like cow, buffalo, all those organisms. These are what? Herbivores. Now, second one are carnivores. Carnivores are those organisms or animals which are particularly depend on the flesh of other animals, either on herbivores or someone others, but completely depend on the flesh of other, or you can say these are flesh eaters. Example, you know it very well, lion and tiger.
lion and tiger. Whereas there are some other organisms in the world, or you can say in the globe, who utilize both type of other heterotrophic mode of nutrition. That is, sometimes herbivores, they behave like herbivores, sometimes they behave as carnivores. And if such organisms are there, they are known as omnivorous. Omni means all type. Omni means all type, everywhere, यानी कुछ भी खा लेते हैं ये. तो कुछ भी खा लेते हैं, इसीलिए ये omnivorous है, मतलब सर्वाहारी. ओके, सब कुछ खाते हैं. सर्व मतलब ईच एंड एवरीथिंग. तो ये प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं. बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ओके, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, रैट, डॉग, कैट एटसेट्रा. तो ये था एक सिंपल इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आगे पढ़ेंगे, और इसमें हम पर्टिकुलरली नेक्स्ट पार्ट में डाइजेशन इन अमीबा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम उसको स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.